ओके, नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हैं जो स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं ले चुका हूं। अब हम लोग इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड उसके लिए जो कंटेंट है उस तरीके से आप लोग लास्ट कुछ मंथ के अंदर 4 मंथ के अंदर अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड कर सकते हो। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, दीज आर द प्राइसेस फॉर दैट। श्योर बेटा अर्जुन, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। गेट एंड एसी ड्रीम्स के लिए है तो 0% इंटरेस्ट पे these are the prices जो पर मंथ आपको अप्लाई करना होगा, 2 आवर्स के अंदर होगा। ठीक है, ये 65,000 है लर्नर जो एनरोल हुए थे अनअकैडमी कॉम्पैक्ट के लिए। ट्रैक 8 कृष्ण प्रकाश से स्टार्ट करा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बिल्कुल 6 month you can apply for this iconic subscriptions. These are the extra benefits: customized doubt solving feature, printed notes, one-to-one mentorship, studies in study programs, interactive open house sessions. ठीक है, चलिए बच्चों, आवाज क्लियर नहीं है? मैं ऑडिबल और नॉट? हितेश, एम आई ऑडिबल और नॉट? होगी ना? बिल्कुल होगी। जितेंद्र, ऐसे क्यों सोच रहे हो? ठीक है, इको आ रहा है बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बच्चों। सभी को आवाज में कोई इशू आ रहा है? किसी को प्लीज क्लियर चेक कीजिए। हेलो, हेलो बच्चों, अभी कोई चेंज हुआ? अभी भी कोई चेंज हुआ है? अभी भी सेम है? आई थिंक मैंने तो वहां से जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया, इतना ही मुझे समझ में आता। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए लेट्स स्टार्ट। बच्चों, ये टॉपिक जो आज के लिए मैंने रखा है फॉर डिस्कशन, दैट इज प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू you can expect one question, but it's not necessary that definitely there will be a question from that chapter. It's not completely necessary, but हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आए। ठीक है, तो प्लास्टिक, इसमें ये क्वेश्चन क्या है? A prompt cantilever of span L carries a vertical concentrated load at the mid span. If the plastic moment capacity of the section is empty, the magnitude of the collapse load is। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। इस क्वेश्चन को रखने के पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। इसके क्वेश्चन को, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही गेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चांसेस जहां बनते हैं, जिस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मैं उसको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप लोगों को दे रहा हूँ, राइट? चलिए देखिए, इसमें अब ये जो इसमें क्वेश्चन है वो इस तरीके का दिया हुआ है आप लोगों को।
मिड पॉइंट और उस पे मिड पॉइंट और उस पे एक नोड है जो आपको अप्लाई करते हुए इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। L/2 L/2, ठीक है। पी लोड है, जनरली इसको लिखा जाता है W से। कॉलेप्स लोड की कहानी जो बनाई जाती है उसमें से W से लिखा जाता है। तो हम लोग उसी W के बेसिस पे इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस W, ठीक है। एंड द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी फॉर द मेंबर सेक्शन इज प्लास्टिक मोमेंट is MP, right? These values are already mentioned in the question, right? MP value is given and we have to find out the value of this collapse load for the given arrangement. Now, how will we proceed to calculate that? There is a simple step. We will apply the virtual work theorem. Now, what is this virtual work theorem? What is this work done? Work done is F dot ds. Force or displacement will give the result for this work done, and the final is F ds cos theta, right? And if the theta is the angle between force and displacement, that means if the force vector and the displacement vector both are in the same direction, then we will get the theta as a 0 degree, and if both are in opposite direction, then we will get as a 180 degree. So that means that will be a negative one. But here, general or the most of the questions you will get the answer as a positive. Okay, if the force and the displacement are both in same direction, right? So theta is the angle between force and displacement, right? These are two terms that we should keep in our mind. And basically three steps or the 3 points. The first one is the force, second one is the displacement, and last one is the theta. And combination of these three will be used to calculate the value of this external work done, right? So we are going to solve the question by considering all these factors now. So what is this virtual work theorem? वर्चुअल वर्क, ठीक है। उसके लिए इस तरह से वर्क डन बाय फोर्सेस इक्वल टू external forces, right? Work done by internal forces. Okay. I think now it's visible. Work done by internal forces equal to work done by external forces, right? So we will write our equation in this format only. Right? And for this member section, A, B, C.
values are to f1x and f2x. In case of the equilibrium equations, if we do not have any external forces to the member section in horizontal direction, right, then it is not possible for us to predict the value of this horizontal forces, that is f1x and f2x. It is not possible for us to predict. So if we apply these equations or these terms to that member, then f1x and f2x are not possible to calculate. There is a one answer or the one possibility that it can be considered as 0, but out of infinity values, that is one possible value that it can be considered as 0, but it is not 100% sure that we can or we should assume that value as a 0. So we will consider that it is not possible for us to predict the value of this f1x and f2x. So what we are going to consider, we have only three forces, that is first one vertical, second one vertical, and the third one is moment. These three moment and the three values are unknown to us, and these values we can solve with the help of this equilibrium equations. And what are those equilibrium equations? That is summation fx equal to 0, sum of all the horizontal direction force equal to 0, summation fy equal to 0, summation mz equal to 0. Now by applying all these three equations, we can actually calculate the value of this vertical vertical forces and this moment. But in the given condition, it is not possible for us to apply this value of summation fx equal to 0. Reason for that, because in the question itself it is not mentioned what is the value of the force that is going to be applied to the member in this arrangement. It is not given in the question. If it is not given, that means it is not possible for us to apply this equation to that member. ये possible नहीं है. अगर नहीं है, तो we can actually apply only these two equations to obtain the values of these reactions and all. So here the unknowns are three, that is one vertical, two vertical, and third one is the moment. And the equations are available to solve these three unknowns are two. That means unknown and the known parameters. The unknown parameters and the reactions are having a different values. So it is not possible to calculate the correct answer. So there will always be indeterminacy or degree of redundancy will always be there. That is 1. So to calculate the value of r, that is unknown minus equilibrium equation. For the given arrangement, unknown is r3 minus 2, that is 1. So r equal to 1 for the given arrangement. Now, if you want to calculate the value of total number of plastic hinges required, total number of plastic hinges required equal to r plus 1. For the given arrangement, r value equal to 1, hence there will be two plastic hinges required for the given arrangement. Now, these two plastic hinges will be A, B, and C. At C point, it's a mechanical hinge, not a plastic hinge. Reason for that, before the connection, it is already the rotations are permitted at the C point. So we will say that C point will have the
mechanical hinge. Like in this arrangement, this is a mechanical hinge. Right, mechanical hinge and the plastic hinge. There are two different members or the hinges. The first one is called as a mechanical hinge, and the second one is the plastic hinges. Right. So how will you define the plastic hinges? Plastic hinges are the hinges which are going to be formed after the application of the forces. The member sections are not able to resist any moment. Then there will be the rotations to the member, and that is called as a plastic hinge. And the mechanical hinge are the one which are itself not possible, which hinges are not possible to carry any type of the moment from the starting itself. Then those are called as the mechanical hinges. So in the given arrangement, this particular hinge is called as a mechanical hinge. That is already at that point the rotations are permitted to the member section. So that's why that is called as a mechanical hinge. Right. So because of this application of the force, the member section is actually going to be deflected like this way. Okay. So if we check the rotations of the member section, then due to this behavior of the member section, the member is actually going to be deflected in a downward direction. So let's say it is θ1. With respect to horizontal, that is deflected by θ1. It is θ1. Again, reason for that, because these two are the parallel lines, and if a line is going to cut the two parallel lines, the theta value must be equal. And the same is the logic for that. But let's say for our calculation result design purpose, we have assumed that is a different value, and let's say it is again going to be θ, and that value is a y1. So if we write on the basis of कोई बात नहीं बेटा, हिंदी में भी बोल देंगे. y1 divided by l by 2, that will give as a tan theta. Right? But if the theta value is lesser, we can assume y1 divided by l by 2 equal to θ1. भाई अगर y1 डिवाइडेड बाय इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या अज्यूम किया जा सकता है, tan θ1. और इसी को थीटा कम होने के चलते tan θ को लिख सकते हैं हम लोग θ1. एंड द सेम इज द लॉजिक फॉर द अदर पार्ट. tan θ2, and that can be considered as θ2. For the given arrangement, from the equation first and the second, we can write that θ1 equal to θ2. Right? θ1 equal to θ2. So this is the result that we can easily obtain from that diagram. And there is one more thing that we want to calculate, that is the rotations or the anti-rotation capacity of this arrangement, that is MP. So if you are going to calculate that, this will be MP, 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 and 0. So why we have written this as a MP or 0? How will you differentiate that? First of all, this C is a mechanical hinge. भाई C अपने आप में एक मैकेनिकल हिंज है, और मैकेनिकल हिंज होगा तो क्या उसमें स्टार्टिंग से ही रोटेशंस परमिटेड है. फ्रॉम द स्टार्टिंग द रोटेशंस आर परमिटेड टू दैट पॉइंट. सो डेफिनेटली there will be anti-rotation capacity 0, तो वो MP की वैल्यू 0. That B point and A point both are plastic hinges, so that's why that will generate the plastic moment carrying capacity, or it will use the plastic moment carrying capacity MP. वो अपने आप को बचाने के लिए, एंटी रोटेशन कैपेसिटी बचाने के लिए यूज करेगा MP की वैल्यू. तो उनको इस बेसिस पे लिखा गया. अब इन्हीं को हम लोग लिखते हैं
वर्चुअल वर्क थ्योरम से टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, इसमें लिखो तो एमपी थीटा 1, एमपी थीटा 1, एमपी थीटा 2, W into, for this arrangement W into y1, W into y1, right? We have already this result that theta 1 equal to theta 2. So we can convert the total equation in theta 1 or theta 2, any of the values of the theta. So we can write if theta 1 equal to theta 2, 2 mp theta 1 or this is L. So if we cancel out all that, that will give 6 mp by L. This is the answer to this question, right? So the answer is 6 mp by L, right? This is the question that you can easily solve as per the condition and all. ठीक है, आप आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैंने इसमें जितनी थ्योरीज थी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन अनदर बेस्ड ऑन दिस प्लास्टिक एनालिसिस थ्योरी। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज भाई अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया वेरी गुड, नहीं कर पाते हो तो मैं आपको इस क्वेश्चन को अगली क्लास में एक एक करके एक एक स्टेप से इसको सॉल्व करके बताऊँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए भी इतना ही। इसे एक्चुअली इससे पहले एक मेरी क्लास थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, एनवायरमेंट की क्लास, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा वगैरह, इसके चलते मैं इसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। ठीक है, कल भी मेरी वो क्लास होगी, आज 8 से 10 बजे के बीच में थी वो क्लास, कल भी मेरी 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही होगी, कल 11 बजे तक चलेगी या फिर 12 बजे तक चलेगी कल वो क्लास। तो आप चाहें तो मेरी वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो क्लास है उसको भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।